जो इलेक्शंस हैं वो पहले 2010 में ड्यू थे, हमने उसको इलेक्शंस को कराया था, बट देयर वाज अ स्टे विद द हाई कोर्ट। एक हाई कोर्ट के साथ स्टे था, इसलिए वो स्टे पे ही चल रहा था। 21 तारीख को जो मैटर था कोर्ट में वो खारिज हो गया, खारिज का डिसमिस हो गया, बिकॉज इन्फ्रक्चर्स हो गया था, 2010 का मामला था। और हमको जैसे कि आप लोग सबको जाओ नॉलेज में भी है कि इवन द अभी जो लास्ट इलेक्शन हुए थे उसमें भी देवर लॉट ऑफ ऑब्जेक्शन कि साहब इनके जो लास्ट इलेक्शन थे वो इस समय हुए हैं, अभी तो कोई इलेक्शन नहीं हुए, तो हाउ कैन दे कंटेस्ट। So based on that also I was found eligible to contest and I was given the voting right also. So therefore the moment this the court case went out, it became urgent for us to proceed with the elections. And so we started our procedure from the 27th of July, where we called for the executive committee meeting and we discussed and finalized the date for the AGM. And the date for the AGM was finalized for 22nd of August. So accordingly, all the notices, the appointment of the election officer, everything took place, and by 30th of July, we had given out the notices, which has been duly received to everybody. Generally, in a small town like this, we prefer to send it by hand and get a receipt, which you've got. Sir, कितने क्लब इसमें जुड़े हुए हैं, कितने मेंबर्स हैं इसमें आपके? See, we are 9 clubs. ये नई कार्यकारिणी सब क्या है, कौन अध्यक्ष चुना गया है, सेक्रेटरी कौन है? अभी जो नई जो कार्यकारिणी है इसमें रुचिर कुमार मोदी इज द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट इज मिस्टर अशोक कुमार गोयल, ट्रेजरर इज मिस्टर ताराचंद अग्रवाल, एंड आपका जॉइंट सेक्रेटरीज आर डॉक्टर ब्रिजेंद्र गर्ग, नो सॉरी मिस्टर SN गुप्ता एंड प्रमोद यादव. देन द एग्जीक्यूटिव मेंबर्स आर डॉक्टर ब्रिजेंद्र गर्ग, राम बाबू शर्मा and Anil Yadav. सर, ललित मोदी जी ने या उनके बेटे ने ये अलवर ही क्यों चुना, इसका क्या कारण आप मानते हैं? अलवर में क्या फायदा होगा इसका? See, मेरा तो ओनली जो बेनिफिट मेरे को नजर आया है इज टू लुक इनटू द डेवलपमेंट ऑफ द स्पोर्ट्स इन अलवर. दैट इज माय प्राइम मोटो कि वी आल्सो कंसिडर्ड हिम, या जिसने भी कंसिडर किया हुआ या नहीं किया हुआ, वट एवर द रीजंस मे बी. एंड मोदी हैज ऑलरेडी बीन अ वेरी बिग नेम इन अलवर with industries like Modi Alkalis and Chemicals, Modi Champion Spark Plugs. So they are very well known as far as the fraternity of Alvar is concerned. So maybe that might be their choice, and it is proxy to Delhi is the most convenient. सर, ऐसे में भी कंपलसरी नहीं था कि उनको कोई यहाँ कोई अपनी उनकी प्रॉपर्टी होनी चाहिए या ऐसा कुछ जैसा? No, we had asked him. So he says that yes, he has a property in Alvar. Now he's a senior person, means he's a high profile person, so I cannot tell him कि साहब show me your documents to verify. नहीं, अभी तक ऐसा कोई है नहीं अलवर में उनकी प्रॉपर्टी है. उनकी प्रॉपर्टी I've been informed that he has bought a property. खरीद लिया? I think हाँ, in somewhere in Rajgarh I think he has bought. राजगढ़ में खरीद लिया. अभी कुछ समय पहले ही खरीदी होगी, जब यहाँ से प्लानिंग जब शुरू हुआ होगा तब. हाँ, yeah, I think it has been done in the month of July. जुलाई में उन्होंने परचेज किया. एग्रीकल्चर लैंड है? एग्रीकल्चर है, रेजिडेंशियल कम एग्रीकल्चर है वो. आई थिंक इट इज नोन एज, यही स्टेटस आता है उसका. क्योंकि यार यहाँ का मूल निवासी, अलवर जिले का मूल निवासी होना जरूरी है शायद स्पोर्ट्स एक्ट के तहत. हाँ, सो देयरफॉर ही इज बिकम अ लैंड ओनर इन अलवर नाउ, सो दे बिकम एलिजिबल. सर, इसमें 15 क्लब माने गए थे पहले और फिर 9 बाद में बना दी गई. नहीं साहब, एक्चुअली क्या है, दिस इज टोटली अ मिसकंसेप्शन. दिस हैज बीन फॉट टाइम एंड ओवर अगेन इन द लोअर कोर्ट हियर आल्सो, where the petition जिन्होंने भी फाइल किया था, that has been dismissed thoroughly on whatever pretext and grounds, because I was not a member of the association जब अपना स्पोर्ट्स एक्ट लागू हुआ था. I was only a member, a full-time member of DCA Alvar, and I was a member, I was a captain of the Priyanshu Cricket Academy, which you are all aware of. We have won all the tournaments under my captainship, and so when the Sports Act came into being, it was the then office bearers who did the registration and who proceeded